Very good morning to all of you, and welcome to the last week of year 2022. So, we are starting this week on a downtrend note because last week was a very tough one, especially the last three sessions, in fact. So, yeah, last week, before that only, Nifty had already breached the 21 DMA level, the green line, and we were expecting that जब भी 21 DMA breach होता है, it's always tough for the markets to sustain, and we had pushed the markets to under pressure level when the Nifty breaches 50 DMA on Thursday. Also, the distribution day count had increased because there were three back-to-back distribution days. So that's something very negative for the market. जब भी clustering होता है distribution day का, clustering I mean when there are back-to-back distribution days or more than 2-3 distribution days in a week. यहाँ तो back-to-back तीन हो गए थे. Friday को Nifty 100 DMA भी breach कर दिया. So last time when there was a fall, the September fall, Nifty got a very good support at 100 DMA. You can see in the chart clearly. And वहां से एक अच्छा rebound मिला था. But over here, the similar trend was there. First 21, then 50. वहां पे 200 भी ऊपर था. यहाँ पे 200 काफी deep है. So it doesn't mean waiting for the 200 DMA level. Plus the distribution day count had increased to 6. So 6 is a big number, especially with clustering of distribution and breaching of 21, 50 and 100. So that's why we had pushed the market status to a downtrend. One distribution day is expected to expire today, but I think as the market is in the downtrend, the focus is not much on the distribution day count. Okay, so now the important thing is upside के लिए कि आज के आज 100 DMA रिक्लेम करके उसके ऊपर क्लोज हो जाए, somewhere around 850 900 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है, then that is positive and then we will mark it as a day one. अभी हम यहाँ से क्या स्पॉट करेंगे, most of you might be aware about these things कि जैसे हम टॉप को देखने के लिए यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डे, राइट? We track distribution day. So now we will be tracking day 1, 2, 3. जब ये 3 दिन के लिए निफ्टी एक पर्टिकुलर लो को होल्ड करता है, then the status changes to rally attempt और उसके बाद हम follow through day देखते हैं. Follow through day means 1.5% gain on a higher volume. तो मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जाएगा. बट उसके लिए फर्स्ट एक पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए. सो उसको हम बोलेंगे D1. सो टुडे इफ निफ्टी क्लोजेस पॉजिटिव और अगर अपर हाफ ऑफ द डेज रेंज में भी क्लोज हो जाता है, देन आल्सो इट्स फाइन. देन वी विल कॉल इट एज अ डे वन ऑफ अ अटेम्प्टेड रैली. और फिर जो आज का लो है, या फिर आज अगर ऊपर ही बंद होता है, तो ये करेक्शन का लो जो है फ्राइडे का, उसके ऊपर अगर मार्केट 3 दिन रहता है, ठीक है, देन वी विल कंसिडर इट एज अ रैली अटेम्प्ट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू लुक फॉर कि रिवर्सल कब हो रहा है. ठीक है, नीचे की साइड में देयर इज नो मेजर सपोर्ट. एक साइकोलॉजिकल था 18,000, फिर 100 था, वो सब ब्रीच हो गया है. तो अभी मेन लेवल टू वॉच आउट इज द 200 DMA लेवल, जो भी काफी डीप है, अराउंड 400-500 पॉइंट से ज्यादा का गैप है. तो लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स. बट यस गाइस, जो भी आपका पोर्टफोलियो स्टॉक की मूविंग एवरेज इसके नीचे है, अकॉर्डिंग टू ओनिल इट्स आइडियल टू गेट आउट ऑफ दैट स्टॉक. जिसमें अच्छा प्रॉफिट है और एक्सटेंडेड है, उसको भी बुक करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा गिरेगा. जो सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड है, ऐसी मार्केट में चांसेस है कि मोस्ट ऑफ दो स्टॉक्स will fall the highest. So need to be careful with your positions when the market is in downtrend. Give some time. Market always gives you opportunity, but वो opportunity लेने के लिए आपके पास capital होना चाहिए. So when we are in a downtrend, capital preservation is always the key. Even the other index, so Bank Nifty was one of the leader in this rally, and you can see थर्सडे तक इसमें प्रॉब्लम नहीं था, 50 DMA के ऊपर क्लोज आया था. सो देयर वाज अ होप कि हाँ ये यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा, और निफ्टी 100 DMA से, तो दोनों एक सपोर्ट के पास थे, बट इट नेवर हैपेंड. यहाँ पे शार्प फॉल आ गया बैंक निफ्टी में. 50 DMA के नीचे ही आई थिंक ओपन हुआ और वहां से नीचे चाहता गया, और द क्लोजिंग वाज नियर द डेज लो. लुक एट द वॉल्यूम्स हाई. ये चीज है ना, अच्छी नहीं है जब डे लो पे क्लोज होता है, वो भी नेगेटिव में. सो दैट्स समथिंग indicating that it might, the technical damage is deep and it might take some time to repair. So थोड़ा रैली आएगा छोटा मोटा,
पॉसिबल है, बट डू नॉट गेट डिसीव्ड। जब तक एक कंफर्मेशन नहीं मिलता ना फॉलो थ्रू डे से, तब तक डिसीव मत होना। बी वेरी केयरफुल विथ योर पोजीशंस कि हाँ चलो 2 दिन मार्केट अच्छा रहा, वापस घुस गए मार्केट में, ऐसा नहीं करना। बी वेरी केयरफुल विथ योर पोजीशंस। Key news: the Tata Motor subsidiary signed a contract with Delhi Transport Corporation for operation of 1,500 electric buses. Siemens emerged as the lowest bidder, and this is, I think, big order. Some 25-26,000 crore का project है गुजरात में for the 9,000 HP electric locomotive project. Infibeam has received a license from the RBI for its bill payment business, that is Bill Avenue. Godrej Property has acquired around 60 acres of land in Kurukshetra, Haryana. They will be building up some project over there. So Brent crude has now been around $84 per barrel compared to $80 last week. So this was I think one of the comfort. अगर 80 के अराउंड या 80 के नीचे रहता तो इंडियन मार्केट के लिए, अपनी कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये कंफर्ट था थोड़ा। In a very tough macroeconomic situation, the crude falls below 80, that was good for market. But अभी फिर से ये 80 के ऊपर around 84 आ गया है. So let's see if it holds over here, it's fine. Always average is important, monthly, quarterly average. अगर वो 85 के नीचे ही रहता है, 80 के अराउंड रहता है, then that's positive. But अगर crude यहाँ से पिकअप हो जाता है due to some less production or some quick डिमांड की साइड से होता है तो फिर भी ठीक है कि चलो ग्लोबल इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, क्रूड का डिमांड बढ़ रहा है। बट मेनली ड्यू टू द कैप्स ऑन द प्रोडक्शन, अगर क्रूड प्राइस बढ़ जाता है then that might be a problem for the emerging economy like us. So on Friday, FIIs were net sellers, just 700 crore. Looking at the way market fell, this was not expected, but yes. And DIIs were net buyer of 3,400 crore. So yeah, these figures were a bit surprising. Okay, if you see the global market update, Friday को US मार्केट थोड़ा होल्ड किया था, डाउ S&P 0.5 के अराउंड ऊपर थे, नास्डेक ऑल्सो 0.2 ऊपर था। अगर आप एशियन मार्केट में अभी देखें तो शंघाई निक्की 0.5% ऊपर है, कॉस्पी ऑलमोस्ट फ्लैट है। सो अभी कुछ ग्लोबल मार्केट के क्यूज नेगेटिव नहीं है, so that's something good. And also for SGX is indicating some 50-60 point of gap up opening, so maybe 850 के ऊपर या 850 के अराउंड ओपनिंग एक्सपेक्टेड है निफ्टी का। दिस इज द फ्यूचर लेवल। और अगर आप 60-70 पॉइंट्स का वो देखिए फ्यूचर और स्पॉट का, तो समवेयर अबाउट 850 यस एक्सपेक्टेड फॉर द निफ्टी। बट nowadays these things change very fast, so but yes, overall it's a positive opening expected. But mind well, do not get deceived by some quick moves, क्योंकि ऐसा होता है, इतना मार्केट फॉल हुआ, 1100 पॉइंट फॉल हुआ, 18,800 के ऊपर चला गया था बाजार। फ्रॉम देयर इट हैज नाउ स्लिप्ड टू ऑलमोस्ट 17,800 के नीचे, ठीक है, in the Friday session. So there are chances कि 100, 200, 300 points के some wild swings might come, but need to be careful. जब तक एक confirmation नहीं मिलता था rule based, till that time you should be very careful in the market. So that's it for today's session. We'll see you tomorrow again at 8:45.